They are joining very fast. Already 26 have joined, sir. So I think, sir, with your permission, we can start. You can Because give a already, background or start straight away. We sir, can give start. a I think we have one of the volunteers to give you a small introduction. So, friends, again, I welcome all, and it's a great pleasure that Professor B.V. Pande is with us. He doesn't need any introduction to you. Probably he has already interacted with your group. Those who might not be knowing, I have the class coordinator Shivashrita with me. So, Shivashrita, you can give a formal introduction, and then straightway we start. The session would be of interactive nature. Professor Pandey will initiate the discussion, and wherever you feel like interacting or raising any issue or question, you are most welcome. I have made this session open to my faculty also. Some of the faculty members are also trying to join. So, so that would be a wonderful thing. Already 38 people have joined. So over to you, Srivastava. I'll restart my system, and in 2-3 minutes I'll rejoin. So please excuse me for 2-3 minutes. Thank you, Over to sir. you. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you, sir? Fine, thank you. Uh, Yes. yes, sir. As all of us have already interacted with you in our previous semester, and that was an amazing session. We had 4 or 5 classes with you, and we got to learn so much from you. And we are really happy that you're here today to um, teach us some more. So, formal introduction. Professor Dr. Pandey has worked with institutes of national and international repute in various capacities, such as lecturer, Faculty of Law, University of Jabalpur, senior lecturer, Faculty of Law, University of Dar es Salaam, Professor of Law, Lucknow University, Visiting Professor, School of Law, City University of Hong Kong, Professor of Law, Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi, and Human Rights Chair Professorship of the National Human Rights Commission, New Delhi. Sir is also a distinguished professor here at NLU Delhi. He has several academic distinctions to his name, including 107 publications in national and international journals and books, 124 papers in national and international conferences, seminars, and workshops. Professor has also been awarded several fellowships by institutions of international repute, including the National University of Singapore, the School of Law, City University of Hong Kong, the Institute of Advanced Studies, Berlin, the Judiciary of the Islamic Republic of Iran, the Harvard Law School, the Tribhuvan University, Kathmandu, the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Germany, the University of Ghent, Belgium, and the University of Warwick, England. Uh, Words fall short for um, uh, elucidating how accomplished Professor Dr. Pandey is. He has been the professor of our professors as well. So we are extremely thrilled to welcome you once again. We hope to learn from you a lot today, sir. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you, Shivashrita. It's a pleasure meeting the same group again, which
with whom I interacted in the first semester in the month of February or so. I made a perusal of the syllabus that is drawn by Professor Bajpayee, and critical criminal law syllabus, which has put this course into 7 modules, and the contents are spread over in 7 modules. But there seems to be little sort of overlap. Syllabus reveals that the course purports to critically engage and review the ideas of criminal law at one place. Then in another place, it says, the syllabus says, intends to examine the emerging critical perspectives with regard to operation of criminal procedure. Later in the objectives, the course purports to critically understand the various aspects of criminal process. Again, in content, the course uses the terms criminal law, criminal process, criminal justice interchangeably. Obviously, as a student, I'm thinking from the point of view of the students. This creates in the mind of the students exactly what is the sort of line of critical inquiry that we seem to be following. I will not dilate on this a little more, and this confusion stays in the minds of, I am thinking as a student, a master's student, also wants whether you want to study critically the criminal law, meaning thereby criminal law means substantive criminal law, or you want to study critically the criminal procedure law, or you want to study critically the criminal processes, process of arrest, process of bail, process of remand, process of trial. You want to study critically these processes, or you want to study criminal justice as a whole. It's a question of nomenclature, and how do you want to answer this question? That is for you. Before I begin my today's lecture on Herbert Packard's style of criticalism, followed in the book Limits of the Criminal Sanction, which has been a book which I consider as one of the most outstanding books in the area of criminal law, coming from a professor in Stanford University way back in 1968. Before I come to the limits of the criminal sanction and Herbert Packard's style of criticalism, I would go back to into history of a course that Professor Bajpayee, myself, and Neeraj Tiwari planned and executed in 2018 in LLM second semester in NLUD itself. Professor Bajpayee would remember. This was a course on Advanced Criminal Procedure course in LLM in 2018. The course was executed in February 2018. And at the time
of this advanced criminal procedure course, we face a choice of one of the three models that we follow. The first model was a critical understanding of select criminal procedure topics. एक मॉडल ये था, critical understanding of select criminal procedure topics. Model A. Model B was select criminal procedure topics to be examined in a comparative trans-system frame, meaning thereby how, say, pre-trial processes operate, how substantive law operates over major systems of the world, Germany, France, Australia, UK, US, and India. The third model was a mix of comparative and critical understanding of select criminal procedure topics. ये तीन मॉडल हमारे सामने उस वक्त थे जब हम एडवांस क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के एलएलएम के लेक्चर प्लान कर रहे थे. Ultimately, we zeroed in on a mixed model of critical understanding of select topics of criminal procedure law, which would be mainly Indian criminal procedure law centric. Indian criminal procedure law centric में चार features थे that was in our mind. The Indian criminal procedure law is codified and determinate as against English criminal procedure law, which is uncodified. It's common law. Maybe uncodified in other countries also. हम लोगों के यहाँ codified criminal procedure law. Second feature was guaranteed human rights and constitutional rights of the accused and the victim. Second feature, जिसको हम लोग देखेंगे. Third feature was judicial review of every adverse decision against the accused or the victim. He will have a right to go to the court of law. And चौथा feature, adversarial nature of the system. It is not inquisitorial in nature. हम लोगों का criminal procedure, हम लोगों का criminal justice adversarial nature का है. This is common law model. As against this, in civil law countries, it is inquisitorial in France, in Germany, in South Korea, many countries. So, हम लोगों ने ये decide किया, the advanced criminal procedure, critical understanding of advanced criminal procedure course. And this ran for some time. I don't know what happened to it. Professor Bajpayee will tell you more about it. I know only the one slice of the history. But that seems to be a kind of now a new variant of that advanced criminal procedure, critical criminal law जो है उसी का एक नया variant है, with his Professor Bajpayee's creation, and he has labored on it and he has made it really critical criminal law very much, where he discusses. Now that brings you one very important inquiry, which we'll chase throughout. And that is, I wrote an article on, at the request of the planners of Kelkar's magnum opus, Criminal Procedure Law, 7th edition was to come
the Sured Malik, he requested me, can you write a horizons, expanding horizons of criminal procedure law? I said, it's a very tall claim, but I have only one qualification for it, that I have studied criminal procedure law in 1959, where criminal procedure law was a 4-topic criminal procedure law, and I have had the honor in NLUD in 2013, where extensive criminal procedure, 1 semester criminal procedure, बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5-topic criminal procedure law taught by part-time teachers, and full-time teachers were avoiding it. Jisme Kelkar and myself, we were together. So Suren Malik said, you are the ideal person to write this horizons. आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है क्रिमिनल प्रोसीजर की कहानी, आप लिख दीजिए. I said, ठीक है, मुझे 1 महीने का टाइम दो. I sat down for 1 month and wrote, and he jumped with joy. So kind of him. He said, ऐसा कुछ किसी ने लिखा ही नहीं था जो आपने लिखा है. I am told that this expanding horizons of criminal procedure law, spanning from 1861 criminal procedure code, British time, down to 2021 Supreme Court decisions, is a very broad horizon. और किया गया. अब अगर tall claim है तो tall claim होगा. And there I realized that criminal procedure law has remained ignored. And that is a question that I'll pose to Professor Bajpayee. Critical criminal law is much better addressed because criminal law has evolved through accepted principles, legality, principle of Dr. If you see Jerome Hall, if you see Glanville Williams, the one criminal law के elements of criminal law, actus reus, guilty mind, concurrence, उस पर debates हैं. तो criticalism criminal law का कहीं ज्यादा स्टेट को हेम कर रखा है क्रिमिनल लॉ के क्षेत्र में. क्रिटिकलिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है? क्रिटिकलिस्ट कहता है कि हम ब्रह्म वाक्य सनातन नहीं मानते. I will question. I will fresh understanding of things. You are giving us पका पकाया हमको नहीं स्वीकार. हम इसको देखेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसकी ज्योग्राफी देखेंगे, इसकी फिलॉसफी देखेंगे, आइडियोलॉजी देखेंगे, कल्चर देखेंगे, कहाँ ग्रो करता है ये क्रिमिनल लॉ, क्यों ग्रो करता है, क्या रीजंस हैं. तो हम ये सब देखेंगे. बिना इसको देखे हुए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आप भी कहेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना. एल्बर्ट कामू रिबेल किताब में उसका बिगिनिंग पैराग्राफ ही रिबेल, one who is able to say no is a rebel. जो नो कह सकता है वो रिबेल है. नो कौन कह सकता है? जो सब चीज को ये कहने की आदत जिसको नहीं. One who can say no is a rebel. One who can critique is a criticalist. I will not accept, even if you are saying that criminal law is rational exercise, ideal. No, I will not accept it. मैं इसको देखूंगा, मैं इसके परीक्षण करूंगा. परीक्षण क्या करोगे? तो सबने एक्सेप्ट कर लिया, हॉल साहब ने एक्सेप्ट कर लिया होगा.
I would like to examine it. My point is that criminal law के क्षेत्र में तो चेक्स एंड बैलेंसेस बना दिए, प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी का चेक एंड बैलेंस, क्रिमिनल लॉ थ्योरी का चेक एंड बैलेंस, एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी का बैलेंस, चेक एंड बैलेंस. बट क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ को has been left almost unquestioned. It is non-problematic. वो तो स्टेट के ऊपर है, जैसे प्रोसीजर फॉलो करे, जैसे घुमाए. इसीलिए अभी मैं एक पुलिस के ऊपर एक पोर्शन कंप्लीट कर रहा था और मैं कंपेयर कर रहा था पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिल्ली राइट्स, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाथरस गैंगरेप, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ, कितना वेरिएशन है. कहीं चार्जशीट हाथरस गैंगरेप में 91 दिन बाद चार्जशीट फाइल, दिल्ली राइट्स में चार्जशीट तो हफ्ते भर में पास फाइल हो गई. हरनवाजे के इन्वेस्टिगेशन, मर्डर इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट तो फाइल नहीं हुई और 10 उन्होंने पेंडोरास बॉक्स खोल दी. क्योंकि स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर shrouded इन सीक्रेसी एंड मिस्ट्री. परत दर परत खुल नहीं रही है. समझ में नहीं आ रहा है कि क्या. परमवीर सिंह को निकाला तो उसने होम मिनिस्टर को तान दिया. उनका तुम भी तो ले रहे थे. अरे तो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे क्या? तुम भी ले रहे थे, हम भी ले रहे थे. अरे तुम एडमिट कर रहे हो, इसका मतलब तुम ले रहे थे. तो पहले तो तुम भीतर जाओ, तुम भी तो ले रहे थे, वो अलग बात है. इन्वेस्टिगेशन जो क्लोज्ड क्रिमिनल प्रोसीजर की क्रिटिकलिज्म बहुत डिफिकल्ट है. इसीलिए मैंने प्रोफेसर वाजपेयी जब अपना ये आर्टिकल एलन नॉरे को भेजा, एलन नॉरे ने ये जवाब दिया. उसने कहा क्रिटिकलिज्म ज्यादातर सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ में रहा है, प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ में तो अभी तक बिल्कुल गड्ढा है. इट इज ए डार्क एली. कौन कैसे चला रहा है, ये हमारे आपस की बात है. आप पुतिन साहब कैसे चला रहे हैं, ये तो पुतिन साहब ही बताएंगे. ये मत सोचो लॉयड के केस में 11 महीने के बाद कन्विक्शन हो गया. उसके पहले 5 साल 6 साल कितने ब्लैक्स मारे गए. वो केस विड्रॉ हो गए. कुछ केसेस में पैसा ले लिया गया और रफा दफा कर दिए गए, प्ली बार्गेनिंग हो गई. ये तो इस केस में बेदिन साहब पीछे पड़ गए और उनकी साख फंसी हुई थी. तो प्रोसीजर इसी तरह है सब जगह. Therefore, there is a need to understand criticalism through in the area of criminal procedure much more than criminal law, substantive criminal law. Say that's all about it. Let us briefly examine. It is no harm, even if criticality has been discussed in the class. Criticality component को हम लोग एक बार फिर से एग्जामिन करें. Critical is defined in Oxford Dictionary as making careful judgments about good or bad qualities of things rather than accepting them on the basis of others' opinion. White collar पहनने वाले लोग अच्छे होते हैं, ब्लू कॉलर पहनने वाले अच्छे नहीं होते हैं. हम देखेंगे ब्लू कॉलर वाले भी अच्छे हो सकते हैं, व्हाइट कॉलर वाले भी गलत हो सकते हैं. Therefore,
criticalists will not accept things as they are. And इसी से critical theory relates to examining culture and literature by considering the social, historical, and ideological forces that affect it or may way it is. Critical theory of culture, critical theory of literature, critical theory of history, subaltern history पूरी पूरी. हिस्ट्री आपकी, हमको सरकारी हिस्ट्री से हमको कोई सरोकार नहीं है. हम subaltern people's history that is rooted in the people's mind. इंग्लैंड में पूरा का पूरा एक मूवमेंट सोशियो हिस्टोरिकल क्रिटिकलिज्म का मूवमेंट डेवलप कर गया. ईपी थॉमसन, एल्बियन फेटल ट्री और विग्स एंड हंटर्स, वो सारी किताबें. ये ब्लैक एक्ट 1723 का क्यों पास हुआ? इस एक्ट में, जिसमें 50 कैपिटल ऑफेंसेस ऐड कर दिए गए. जंगल में ब्लैक फेस करके जाना कैपिटल ऑफेंस हो गया. पर्पस ये थे कि जंगल में सिर्फ ओनर ऑफ द फॉरेस्ट जाएगा. फॉरेस्ट बिकेम ए प्रॉपर्टी. फॉरेस्ट के फॉरेस्ट बिक गए. ऑर्डिनरी कम्युनिटी वाज नॉट परमिटेड टू एंटर फॉरेस्ट. तो उनको ब्लैक एक्ट पास करना पड़ा. Fortunately, Black Act की एज बहुत कम थी. Otherwise, it would have brought great infamy to English criminal law system. Now, why such critical theory will expose these things? Social history of laws, social history of institutions, death penalty क्यों आया, death penalty क्यों abolish हुआ. इंग्लैंड में 18th century में 212 offenses were punished with death. 212 offenses, including pickpocketing. जहां हैंगिंग हो रही है वहां pickpocketing हो रही है, और pickpocketing के लिए सजा डेथ. वही इंग्लैंड में 1976 में death penalty was abolished. Because that was a society that learned through critical theory and critical thinking. Critical thinking relates to process of analyzing information in an objective way in order to make a judgment about it. Critical thinking. Do you have critical thinking? No, I have only analytical thinking. No, you should have critical thinking. Then critical skills relate to abilities to enable students to evaluate information. These are critical skills. So critical theory, critical thinking, critical skills are all tools. What way critical understanding is different? It helps to take understanding to a different level. क्यों क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है? इसलिए नहीं कि वाजपेयी जी कह रहे हैं इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है. क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए जरूरी है कि अगर आप डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में पहुंचना चाहते हो, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ तो लोग 100 साल से पढ़ रहे हैं. वैसे तुम भी पढ़ लेना चाहते हो तो ठीक है, पढ़ लो, इम्तिहान पास हो जाओगे. बट अगर लेवल ऑफ थिंकिंग को ऊपर उठाना है, दूसरा, it helps to understand rules and foundations in a new light. This right exposes different facets of reality.
criticality at normative level. क्रिटिकलिटी के भी फैसेट्स हैं. किस फैसेट में आप क्रिटिकलिटी पढ़ना चाहते हैं? नॉर्मेटिव लेवल में पढ़ना चाहते हैं. क्रिटिकलिटी हम इन्फोर्समेंट लेवल में पढ़ना चाहते हैं. वो नॉर्मेटिव लेवल से डिफरेंट हो गया. इन्फोर्समेंट लेवल की बात करो. इट हेल्प्स diverse viewpoints of criticality. Accused viewpoint. आप किसकी तरफ से बोल रहे हो? हम accused की तरफ से बोल रहे हैं. तो बताओ ना. Victim's viewpoint. हम victim की तरफ से बात कर रहे हैं. Criticalism from the victim's point. Criticalism from accused point of view. Criticalism from the point of view of different agencies, communities' point of view. Criticalism from the point of view of different agencies. पुलिस के, आप पुलिस वाले हैं क्या? आप मीडिया वाले हैं क्या? आप कोर्ट की तरफ से बात कर रहे हैं. तो हर आदमी अपना व्यू पॉइंट क्रिटिकलिज्म पुश करना चाहता है. और क्रिटिकल स्टडी उन सबको अपॉर्चुनिटी देती है. How normative level of criticality is different from enforcement level criticality. Normative criticality may focus on legislative norm or judicial norm. Judgment norm को हम देख रहे हैं. इस norm ने किस तरह से impact किया? अरनेश कुमार ने किस तरह से अरेस्ट लॉ को चेंज किया? स्टडी की एनएलयूडी के कुछ टीचर्स ने. अरनेश कुमार के नॉर्म ने इस तरह से चेंज किया. नंबर ऑफ अरेस्ट वेंट डाउन. नाउ at enforcement level criticality, the focus can be on police practices, trial court practices, appellate court practices, advocacy practices, witness practices. जब क्रिटिकलिटी करनी है और इन्फोर्समेंट लेवल पर करना है, उसके भी इन्फोर्समेंट लेवल के भी लेयर्स हैं. सब इन्फोर्समेंट एक साथ नहीं हो सकता. पुलिस के लेवल पे, ट्रायल कोर्ट प्रैक्टिसेस के लेवल पे, एपेलेट कोर्ट प्रैक्टिसेस के लेवल पे, कितने में अपील, कितने में कितना टाइम लगता है. हम लोगों ने किया था एक केस, कितना टाइम लेता है दिल्ली में. तो मैक्सिमम टाइम वाज टेकन इन प्रोसिक्यूशन विटनेस स्टेज. मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कोई डिफेंस विटनेस था ही नहीं. थेफ्ट के केस हैं, 10 साल से चल रहा है. प्रोसिक्यूशन विटनेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो सब सरकारी विटनेसेस थे. पैसा दिया गया तो पैसा नहीं दिया गया तो नहीं आए. ज्यादातर सरकारी विटनेसेस थे. पानी वाला विटनेस वो बाद में फिर वो सब एक्सपोज हुआ रैकेट. तो और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में डिफेंस वाले में टाइम बहुत कम लगा. डिफेंस विटनेस नहीं थे. थेफ्ट में पकड़ा गया है तो फिर उसको कौन बचाएगा? Therefore, finally, we come down to learn about critical realism. Now, हमने थर्ड पार्ट में तो आपको रियलिज्म, क्रिटिकलिज्म के बारे में थोड़ा सा एक सतही ज्ञान दिया. फिर अगर क्रिटिकलिज्म का गहरा ज्ञान लेना है, critical realism, dialectical critical realism from the experiences and writings of one of the foremost scholar, एलन नॉरे, जिनको हम लोगों ने जो हम लोगों ने उनको एनएलयूडी में बुलाया 2000. प्रोफेसर वाजपेयी, which year? Sir, we have invited him twice. So he came 2016 and then 2017, I guess. 15 or 16? 16, sir, I think. 15.
हाँ, somewhere 15, वो 16, and then again. हम लोग गए थे, वो 16 में आए, हम लोग Ah, वो 15 में गए 16 में. थे, Yes, sir, 16 में 15. आए वो. Yes, sir, yes. I was telling Professor Bajpayee, this man is one of the top critical thinkers of the world. और ये हम लोगों का सूटकेस घसीट रहे हैं वारिक Oh, वारिक रेलवे स्टेशन पे, वहां कुली नहीं मिलता है, और हम लोग Lemon, बड़े बड़े सूटकेस लेके चले गए थे Leamington हिंदुस्तानी. Spa. He lives हाँ, in लेमनटन Leamington साहब Spa. है. हिंदुस्तानी आदमी तो हर जगह खलकन लादे बैल, तो फिर कबीरा का घर शिखर पर जहां सलहली गैल, बैल न टिके पिपीली का खलकन लादे बैल. खलकन जो है वो बैल लाद के घूमता है. तो हम लोग अपने बड़े बड़े सूटकेस लेके पहुंच गए, वहां कोई कुली नहीं मिला, तो प्रोफेसर एलन लॉरे ने दो हाथ में दो बड़े बैग घसीटे, छोटे मोटे बैग हम लोगों ने कंधे में लिए, अपनी कार तक लेके गए, क्योंकि वहां को मजदूर कुली नहीं मिलता. हम लोग सोचे थे कोई कुली आएगा. तो मैंने फिर प्रोफेसर वाजपेयी से कहा कि ये देखो, वर्ल्ड का टॉप क्रिटिकल थिंकर हम लोग के बैग घसीट रहा है, ये हम लोग का बड़ा भारी ऑनर है. और आज हम उस प्रोफेसर एलन नोरे, एडिटर ऑफ मोस्ट important and popular texts on critical realism, essential readings. Archer et al. 1998 Maya Critical Realism. Norre's work ranges across law, philosophy, social theory, and ethics, and issues of crime, punishment, justice, moral psychology of guilt, and forgiveness, incorporating exploration of the concept of love in law. Currently, Eleanor is working on concept of love in law. Professor Bajpayee is very fond of happiness. Happiness. So you can come in touch with Ellen Nore. Let us share a little. Ellen has sent me an interview in 2021 that he had with Jamie Morgan, in which he speaks out his mind on what realism means to him. Ellen Norris says that I developed my work from general legal theory and theory of punishment into a critical, but I would like to claim technically precise study of criminal law. In this period, critical realism was still the backbone. I wrote a book called Crime, Reason and History in 1993, first book of Alan Norrie, major book, which analyzed critically the general principles of criminal law. It treated these principles as socially and historically emergent in modern liberal society and essentially contradictory. My point was that law was full of conflict and oppositions, and not as it saw itself, a project of rational reconstruction from universal first principles. US critical legal studies movement had taught us lacked a deep grounding in history, ideology, or philosophy, such as provided by critical realism. Then Ellen Norrie goes on saying, my understanding of the nature of law and its relationship to society, history, and other ethics, how would critical realism under labor for what I wanted to do without quite knowing where or how I wanted to go? How might critical realism meet up with me or that? Now, Ellen Norrie is a surprise. I was aware that my work on punishment, his PhD was on punishment. Punishment and criminal law had brought out historically
formed contradictions, what I would begin to see as the antinomial quality of basic legal categories. I needed to think about how one could understand conflict, opposition, contradiction, antinomy in a more general way, but how in legal theory as this at this time. Critical understanding was overwhelmingly provided by Derrida and deconstruction. But he says he was impressed by Derrida and Roy Bhaskar, perhaps an Indian who must have settled in UK. Roy Bhaskar must be an Indian scholar. Bhaskar Roy must be, his name must be Bhaskar Roy. इंग्लैंड में जाके रॉय भास्कर हो गया, रॉय पहले आ गया, भास्कर बाद में हो गया. Therefore, this is how Ellen Norrie and grew into an a enigmatic scholar of criticalism who wrote first major work in 1993 and continues to write even in 2021. वो एक क्रिटिकलिज्म, मेटाफिजिकल क्रिटिकलिज्म वाली लाइन लिए हुए, he is moving ahead, is very remarkable. Finally, we come down to, I return back to the promised Herbert Pecker's brand of criticalism, or integrated understanding of procedural criminal law. Now, I had promised you, Professor Bajpayee, as a matter of fact, that I will discuss here. Fortunately for you, if you have this expanding horizons of criminal procedure law, this is a handy material, 16 pages printed in, that has come in 14th February 2021 volume of Supreme Court cases. In page 4 to 7, my point here in this page 4 to 7 is to tell people how you can learn usefully from some standard textbooks in the Western countries and apply and enrich your criminal procedure critical understanding. Now, in this, one important reason for the existing plight of criminal procedure subject and courses is the disintegrated and isolated manner of its perception and teaching. Criminal procedure law is a conglomeration of multiple rules distributing powers to various criminal justice agencies, such as the police, the prosecution, the courts, the prisons, etc., but without imparting even a rudimentary awareness about the agencies themselves. Similarly, though the procedure law relates to enforced liability for the offenses defined by substantive criminal laws, the substantive criminal laws as such do not figure in the conceptualization and teaching of procedural law. This state of disconnect is aptly described by A.G. Noorani in the following words. A.G. Noorani कहते हैं, while every work on British constitutional law discusses at length the status and powers of police, books on Constitution of India ignore the profound importance of the police in a polity governed by the rule of law. Similar disconnect exists in the textbooks on criminal law, criminal procedure law too, because criminal law and criminal procedure law are perceived as distinct compartments. Because we want to understand substantive criminal law differently from
procedural criminal. We want to keep them in separate compartments. This is wrong. And this has been taught to us by none other than Professor Herbert Packer. To address such a disconnect and disintegration in the criminal procedure subject, it may be useful to take a few lessons from the approach taken by Professor Packer in his classic Limits of the Criminal Sanction, a basic reading on the subject for the American students and teachers. The book provides a unique blending of the substance of criminal law and procedural law in a three-part format that devotes part one to the rationale, part two to process, and part three to limits. So, rationale, substantive criminal law के portions, punishment कितनी मिलेगी, principles क्या हैं, actus reus mens rea, ये rationale में आ गया, part one. Part two में processes क्या है, और part three में so part two process, part three limits. In part one, issues relating to punishment, chapter 1 to 4, culpability, chapters 5 and 6, and proof and proportionality, chapter 7, are discussed. Similarly, in part 2, criminal process, chapter 8, followed by 3 chapters relating to the models in operation, namely from arrest to charge. In charge is chapter 9, from charge to guilt determination in chapter 10, and review of errors in chapter 11. And pithily discussed chapter 12 sums up the process part and is titled as Trends and its Impact, a tentative appraisal. Last part relating to limits once again diverts back to the substantive criminal law issues in 5 chapters. The back and forth movement from substantive criminal law to procedural law and reversal back to the substantive law issues and debates is so natural and logical that the knowledge of two or more subjects comes to the reader in a totally integrated form. This is what is called for integrated criticalism. G.S. Bajpayee is a master in developing new models, integrated criticalism. And that basic idea has come from this Herbert Packer. And how he does it, see, for example, the following approximation made by Professor Packer in the context of culpability and conduct. Thus, no one इसके 4 approximations देते हैं वो कि 4 step proposition है. No one may be subjected to criminal punishment except for conduct. Conduct जरूरी है. बिना conduct के actus reus के criminal punishment नहीं. Conduct may not be treated as criminal unless it has been so defined by appropriate lawmakers before it has taken place. Principle of legality. नल्ला कोई नसाने लगी. तीसरा proposition. This definitional role is assigned primarily and broadly to the legislature, secondarily and interstitially to the courts, and to no one else. ये भी कह दिया, to no one else. Police definitional role play नहीं कर सकती. Prosecutor definitional role play नहीं कर सकता. Are you getting the point? Definitional role is assigned primarily to legislature. तुम define करो crime के elements क्या हैं.
This is your function. And secondarily and interstially to the courts. And उसके बाद लिख दिया to no one else. पुलिस को प्रोसिक्यूटर को तो बिल्कुल नहीं. अगर शूटिंग हुई है, अगर किलिंग हुई है, तो एफआईआर होगा. उसके बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगा दे, कोर्ट उस क्लोजर रिपोर्ट को मान ले, ये कोर्ट का काम है. एफआईआर तो होगी. पुलिस अपने मन से एफआईआर करते कि प्राइवेट डिफेंस में मारा. प्राइवेट डिफेंस है कि नहीं है, ये तो कोर्ट तय करेगा ना. इसके लिए एफआईआर होनी जरूरी है. In order to make these prescriptions material and not merely formal, the definitions of criminal conduct must be precisely enough stated to leave comparatively little room for arbitrary application. Law बनाते वक्त तुम arbitrary application को रोकने के लिए चीजों को precisely define करो, not vaguely. So this is Herbert Packer's style of meshing together substantive criminal law ideas with procedural criminal law. Then at some another place, a forced for approximation convey multiple substantive and procedural issues such as the principle of legality, conduct as element, assignment of specific functions to agencies, and need for strict and precise definition of criminal conduct to rule out arbitrariness in the composite way. Professor Packer's lucid exposition of the principle of legality that takes the reader to an abstract level most of the substantive criminal law writings is explained so easily through the term allocation of competences. Herbert Packer allocation of competences word use करते हैं principle of legality को communicate करने के लिए, which simply means that different criminal justice agencies are assigned to perform definite functions and different functions. In the context of allocation of competences, the procedural law makes a distinction between the agencies that take the law and those that apply the law, such as legislative law governing criminal conduct consists of generalized directions as to what people are forbidden to do in the future. Judicial law consists of particularized statements attaching legal consequences to particularized past conduct. This is the understanding Professor Packer. To Professor Packer, the principle of legality may assume different significance when seen in the context of agencies like courts, police, and prosecution. According to Professor Packer, courts operate, how beautifully he is making a distinction between courts and police as an agency. इंडिया में डिबेट चल रही है इस वक्त. प्रोफेसर वाजपेयी इस डिबेट में मेन सूत्रधार हैं कि पुलिस एजेंसी की सुप्रीमेसी रहे या मजिस्ट्रेसी कोर्ट्स की सुप्रीमेसी रहे, किसका रोल बड़ा हो, किसका रोल छोटा हो. Courts operate in the open through what has been described as reasoned elaboration. They have to justify their decisions. There is an obligation to relate the particular bad thing that this man did to other bad things that have been treated as criminal in the past. The system of analogical reasoning that we call the common law method
is very substantial impediment to arbitrary decision making. The fact that courts operate in the open according to a system of reasoning that is subjected to the scrutiny of interested audience, both professional and lay, militates against any but the most marginal invasions of the values represented by the principle of legality. Speaking in the context of other enforcement agencies, Professor Packer has this to say. By contrast, the police or official prosecutors operate in a setting of secrecy and informality. क्यों पुलिस डिफरेंट है, क्यों प्रोसिक्यूशन डिफरेंट है? क्योंकि पुलिस और प्रोसिक्यूशन they operate in a setting of secrecy and informality. परमवीर सिंह और वजीर साहब में क्या बात चल रही थी, ये कोई भी कोर्ट भी नहीं बाहर निकाल सकता. कोर्ट भी सिर्फ इशारों में कह सकता है. By contrast, the police or official prosecution agencies operate in a setting of secrecy and informality. Their processes are subject to public scrutiny in most sporadic and cursory ways. Although some courts, particularly low-level courts in large cities faced with the necessity for disposing assembly line justice, at times behave with informality and lack of articulation that characterizes the police and prosecutors, no one has ever discovered a police or a prosecution of organization that behaves like a court. Professor Bajpayee, आप तो पुलिस ट्रेनिंग के लिए जाते हो, उन लोगों से कहो कि do you behave like a court ever? Are you open to public scrutiny? जस्टिस नारीमन बहुत परेशान है कि कोर्ट में कैमरा लगना चाहिए, पुलिस स्टेशन में कैमरा लगना चाहिए, वो कैमरा लग के नहीं दे रहा. वो कह रहे हैं इतने कैमरा का इंतजाम कहाँ से करें? कैमरा का इंतजाम करना कठिन नहीं है, वो तो किसी को ऑर्डर कर दो कैमरा लग जाएंगे, दुगने कैमरा लग जाएंगे. इंतजाम अगर हो गया तो पुलिस के जो कार्यकलाप हैं वो बंद हो जाएंगे, ओपन आ जाएंगे. ऐसा होना नहीं चाहिए. ये सीक्रेसी और प्राइवेसी की बात है, ये तो हम लोगों के भीतर की बात है. इसमें तो मिनिस्टर साहब भी और परमवीर सिंह सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग एक साथ हैं. अभी परसों ही फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ चौहान साहब ऑफ महाराष्ट्र, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस शुड बी अकाउंटेबल नॉट टू रूल ऑफ लॉ, पुलिस शुड बी अकाउंटेबल ओनली टू पॉलिटिशियन इन पावर. बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप. आज आप पावर में है, कल दूसरा पावर में होगा, तो वो आपकी बात को दोनों एक दूसरे को समर्थन करेंगे. और जो टॉप कॉप है, दैट इज रिबेरो कह रहा है नो दे शुड बी अकाउंटेबल ओनली टू रूल ऑफ लॉ. नहीं, आप क्या कर रहे हैं साहब? हमारी तो मुसीबत आ जाएगी. रूल ऑफ लॉ हो जाएगा तो फिर तो हम तो समझ जाएंगे, सबके सब हमारी नौकरी बेकार हो जाएगी. But sir, Rivero never wanted the same police to be accountable when he was heading the police. Now he is saying that is also a contrast. But he is saying that he was quite instrumental in Punjab also. He was one who said bullet for bullet. No, he at that time in police fight it out wala tha, but not like दूसरे जो पुलिस वाले थे बाद में जो आए जिन्होंने कहर मचा दिया. Rivero was never for it, and he has been taking a stand. Now that's a question that we must ask this question. और मैंने अपने अभी जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको शायद कवर करूंगा, हालांकि वो जरा प्रीमेच्योर है, कि पुलिस सुप्रीमेसी के लिए हम लोग इतने लालायित क्यों हैं, इंक्लूडिंग हर्बर्ट पैकर साहब. पुलिस की सुप्रीमेसी होनी चाहिए एडवर्सरियल सिस्टम में. जब इंक्विजिटोरियल सिस्टम में पुलिस कैन ऑपरेट अंडर स्टेट प्रोक्यूरेटर,
डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोसिक्यूशन पुलिस को डिसाइड Sir, करता sir, है। probably the popular understanding in the society and within the criminal justice system is that police is the only agency which could demonstrate the effectiveness, literal, practicality and effectiveness of the system, because they have the power. They can quickly arrest the people. People will be happy. So police becomes the instrument of bringing certain kind of superficial effectiveness to the system. All other agencies work in a very different way. But police being on the forefront is capable of showing, genuinely or fakely, that is, I'm not saying, but they can bring a sort of charisma in the criminal justice system. This No, is, but why should it be in the UK, in USA, जहाँ की हर्बर्ट पैकर साहब बात कर रहे हैं? आप ये जानते हो कि सीक्रेसी, इनफॉर्मेलिटी, फिर आप उनके ऊपर किसी तरह का सेफगार्ड, चेक का बैलेंस क्यों नहीं लगाते हो? हाँ, वो साहब नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? जब जर्मनी में लग सकता है, फ्रांस में लग सकता है, साउथ कोरिया में लग सकता है, one more thing, sir. नेपाल लग सकता है। Sir, नेपाल में पुलिस एक्ट्स अंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन फ्रांस, नेपाल में is above the police. Yes, sir. Police complies the order of Director General of Prosecution. तो फिर ये इंडिया में क्यों नहीं? सर, इसका आंसर ये है कि other agencies of the system, they want the things which they are not able to do. They want the police to do that. Judiciary can't come out, or prosecution, or prisons. They have certain limitation of acting in a certain way. So they somehow achieve certain things through police. ये कलेक्टिविटी है सर, इसीलिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन द वन हैंड यू वांट द पुलिस टू बी रेगुलेटेड, बट एट द सेम टाइम यू डू नॉट वांट एनी चेक टू बी पुट ऑन देम. So the politics governing the system and agencies loggerhead. You see what has happened in the US, where the whole issue is coming down to police being totally defanged. Now, the case of in which this man has been convicted, Lloyd wala case. Derek. Yeah. Now, it is coming down to a situation where people are saying totally defang the police. आप ऐसी सिचुएशन को फेस करना चाहते हो? पुलिस के ऊपर किसी तरह का अंकुश लगाने को तैयार नहीं। अब तर्क हम ये दे रहे हैं कि पुलिस पब्लिक को अच्छा लगता है, पब्लिक को उससे आश्वस्त होती है, तो फिर उससे होता भी तो ये है कि जैसा यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, वहां तो फिर अब बात हो रही है कि पुलिस को बिल्कुल ही पावरलेस कर दो। वहां तो फ्रांस की पुलिस की तरह करना चाहते हैं जैसा जर्मनी में है, अंडर द कोर्ट ऑर्डर्स पुलिस एक्ट्स, कोर्ट ही ऑर्डर करेगा। और ये एफर्ट इंडिया में सकीरी बासु वाले केस में हुआ था, इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करेगा मजिस्ट्रेट, और वो अभी तक जजेस को भी स्वीकार नहीं हो रहा है। जज भी कह रहे था मजा नहीं आया था, अगर मजिस्ट्रेट ही सब कुछ करेगा तो फिर तो हमारे पास बहुत ज्यादा पावर हो जाएगी, पुलिस को फिर कैसे कंट्रोल करेगी, पुलिस कैसे कंट्रोल होगा। तो बावजूद प्रकाश सिंह के डिसीजन में भी यही कहा गया है। अब सर दिस इज द टाइम फॉर प्रकाश सिंह टू, हम लोग सर थोड़ा काम कर रहे हैं, आपसे डिस्कस करेंगे। प्रकाश सिंह का सर काफी पुराना हो गया, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच रिक्वायर ए रिन्यूअल एंड ए फ्रेश पिटीशन इज नीडेड। सो प्रकाश सिंह टू इज वेरी मच नाउ रेलेवेंट सर। अब तो प्रकाश सिंह के समय तो सर कोई डेटा नहीं था, कोई, अब तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, एनसीआरबी का डेटा है, देयर आर न्यूअर इश्यूज हैं। प्रकाश सिंह टू तो हो जाएगा, प्रकाश सिंह टू की लाइंस क्या होंगी? नहीं, लाइन सर वही होंगी। देखिए प्रकाश सिंह वन सर इम्प्लीमेंट जिस वजह से नहीं हुआ, उसमें इन्वेस्टिगेशन में खुली छूट पुलिस को बॉम्बे वाले इन्वेस्टिगेशन में है, हाथरस में है। 95 डेज के बाद एफआईआर करो।
उसकी विक्टिम की बॉडी जला दो, जो मना है करो, उसके बाद फिर खुले घूमो, ये सब हुआ। हम सब ने देखा। जी सर। इससे ज्यादा फ्रीडम अब पुलिस को कहाँ मिलेगी? प्रकाश सिंह इससे ज्यादा फ्रीडम क्या देंगे? प्रकाश सिंह 2 में आप क्या फ्रीडम दोगे पुलिस को इससे ज्यादा? जैसे मना है इन्वेस्टिगेशन करो। नहीं 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 सर, आप इससे प्रकाश सिंह टू इज सर ब्रिंगिंग ए बैलेंस एंड रेगुलेशन टू द पुलिस पावर, इन्वेस्टिगेशन, और बहुत से जो इंटरकनेक्टेड है सर, उसमें कौन रजिस्ट्रेशन बैलेंस भी है। करेगा? बैलेंस कौन करेगा? हु विल बैलेंस? नहीं सर, वो रिफॉर्म प्रोजेक्ट का पार्ट है हमारे ना सर, हम उससे निकालेंगे ना सर ये आइडियाज जो काम कर रहे हैं, उसमें इतनी चीजें भी हैं। भाई इससे आप यही सवाल सुप्रीम कोर्ट जजेस से पूछो, वो सब भी यही कहेंगे कि भाई पुलिस को तो रहने दो, पुलिस बहुत ठीक है, हमें बचाती है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी होती है और पुलिस वाले आते हैं और रात को लाल बत्ती चलती है, वो जरूरी है। हर आदमी एक वो मैंने साउथ कहा ना सर, अफ्रीका में पुलिस फोर्स, उसको पीसफुल फोर्स कैसे बना दिया उन्होंने, साउथ अफ्रीका जी में बना पुलिस, दिया। पुलिस की सर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो पावर एलिमेंट है, चाहे वो किसी भी एज, वो पुलिस के थ्रू एक्सरसाइज होता है। भाई कोर्ट को भी पुलिस की जरूरत है सर, अगर उन्हें पावर डिस्प्ले करना है, सो दे नीड द पुलिस टू शो दैट ऑफ। तो पुलिस को व्हाई वो, शुड सिविलाइज सिस्टम बी पावर, ऐसी रॉ पावर का क्यों पागल नहीं रॉ दीवाना पावर बना? तो सर उन्होंने नहीं दी, लेकिन वो प्रैक्टिकल पुलिसिंग में वो रॉ पावर आती, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि पुलिस विल यूज द इनडिस्क्रिमिनेट पावर। हर जगह पावर हैज बीन रैशनलाइज्ड इन सीआरपीसी, हर जगह ये कहती है कि उतनी फोर्स यूज करोगे आप। इनफैक्ट हो क्या रहा है? इनफैक्ट हो क्या रहा है? हाँ इनफैक्ट उन्होंने बहुत अलग चीज है, हाँ। हाँ, तो वो सर देखिए सर, फिर ऐसा है ना सर कि आफ्टर गिविंग सर्टेन पावर, लाइक पावर ऑफ अरेस्ट आप पुलिस को अगर दे रहे हैं, फिर एट द सेम टाइम आप चाहो कि पुलिस वहां ज्यादा प्रयोग ना करे पावर का, ऐसा नहीं होता सर। दिस इज द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। एक बार आप पावर देंगे तो वो पावर अच्छे काम के लिए भी यूज होगा और गलत काम के लिए भी यूज होगा, और यही हो रहा है एग्जैक्टली। ये रैशनैलिटी इज मिसिंग। वो इंडिविजुअल डिसीजन एंड डिस्क्रिशन है, जैसे जजेस को डिस्क्रिशन है, लेकिन जजेस एक कन्वीनियंट एटमॉस्फियर में, बैलेंस वे में, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड कहीं भी तो हो सकता। लेकिन देख, पुलिस को जो डिस्क्रिशन जैसे एक्सरसाइज करना, दे ऑफन गेट इनटू द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। वो और वो सब जब तक पावर पुलिस के पास रहेगा तब तक ये शिकायतें भी रहेंगी, लेकिन पावर देना भी जरूरी है। ये डिबेट बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है सर, इसीलिए तो एक पुलिस की क्रिटिकलिटी का एक अलग तरह का डिबेट है। शिवश्रिता बताओ तुम। Yeah. Anybody of शिवश्रिता, you has any view? It's a very thought-provoking discussion. Yes. डू यू हैव एनी व्यू ऑन दिस? शिवश्रिता, Anybody has any view? पुलिस सुप्रीमेसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन स्टेज में? जैसे चाहो जैसे इन्वेस्टिगेशन करो, जितना चाहो जो करो। सर एकदम से सुप्रीमेसी नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, बिकॉज देन अब्यूज ऑफ पावर होने के बहुत चांसेस हैं. I mean, yes, the police does require certain degree of freedom to do their work, but not to the limit of an extreme level wherein they can do whatever they please and however they please. Sir, ऐसे छोटी मोटी बातों को ही लेकर, like for example COVID times में ही we have seen कि अननेसेसरीली जब भी लाइक कर्फ्यू टाइम हुआ भी नहीं होता है, अननेसेसरीली ऐसे छोटे मोटे दुकानदारों को, ठेले वालों को ऐसे ही हटा देते पुलिस वाले, निकलो यहाँ से, ये करो वो करो. बट जबकि मॉल्स में भले ही भीड़ भाड़ हो, पुलिस वाले उनसे जाके बहुत आराम से बात करते हैं. तो अगर ये चीज को, अगर ये छोटी सी चीज है, कल को अगर पुलिस को एकदम अनकंट्रोल पावर मिल जाता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन स्टेज, तब तो वो अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं सर. सो एक चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए, मतलब देयर शुड बी समथिंग कि जिससे पुलिस को एक डर लगे. ऑन द स्पॉट चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? क्योंकि उस वक्त तो एक्शन हो रहा है, उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस वक्त चेक एंड बैलेंस कौन करेगा भाई? ये मजिस्ट्रेसी को दोगे पावर या प्रोसिक्यूशन को पावर दोगे? प्रोसिक्यूशन को तो हमने बिल्कुल बुद्धू बना के रख दिया, जबकि 1973 में ही इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन का मतलब यही था. प्रोसिक्यूशन तो बिल्कुल एक जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस हो गया, अब उसको उठने ही नहीं दे रहे हैं. जैसे ही वो उठने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जरूर है, चपत लगा के छोटा कर दे रहे हैं कि
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी यही हो रहा है। वो विक्टिम वाला जो था, अभी जजमेंट जो आया था बंगाल वाला, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। सो व्हाई दिस इज persistently continuing? If we want to change the dynamics of power between different agencies, what is called for? And apart from political change तो हम कर नहीं सकते, but we can suggest normative change. लॉ बदलने की बात हम लोग कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस की बात कर सकते हैं। चेक एंड बैलेंस एट द ग्राउंड लेवल, जहां पे एक्शन हो रहा है, जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वहां पे मकबर वनीदा वाला एक केस है 2009 का, उड़ीसा का। वहां पे एक्यूज्ड वाज एन एमएलए, ही वाज अ पॉलिटिकल पावर। उसने अपने अपोजिशन के लोगों को मर्डर करवा दिया और एफआईआर में उसका नाम था। उसने अपने क्लाउड की वजह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सेकंड एफआईआर 173(8) में उसने सेकंड एफआईआर करवा दी। उसमें उसका नाम नहीं था और वो खुद छुट्टा घूम रहा है, विडो को थ्रेटन कर रहा है, अब मैं तुझे भी मारूंगा। तो विडो ने हाईकोर्ट को एक लेटर लिखा। हाईकोर्ट ने 482 में उस लेटर को सू मोटो कॉग्निजेंस लिया। आई सैल्यूट द हाईकोर्ट जज। वो कहा कि फर्स्ट एफआईआर के हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशन करिए। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा दिस इज ए केस ऑफ अब्यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पावर। यहाँ पे तो समझ में आ गया, वो विडो जो थी बड़ी स्पिरिटेड थी, वो हाई कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट चली गई। ऐसे कितने स्पिरिटेड लोग हैं इस समाज में जो पुलिस के सामने खड़े हो सकते हैं, पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट दे सकते हैं। तो क्यों नहीं मजिस्ट्रेसी की ड्यूटी करो कि देखो आप इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड जस्ट हो। मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? वाजपेयी साहब, इसमें सोचने की बात है। Yes, sir. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मजिस्ट्रेसी। आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है 2.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना खाली बैठने के लिए, आप देखिए इन्वेस्टिगेशन फेयर है कि नहीं। Yes. एफआईआर हो गई है और एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आप उसमें देखिए इन्वेस्टिगेशन फेयर है कि नहीं। बिल्कुल। नो So on same lines, Yes. Yes, sorry to please. interrupt, but on the same lines, there are provisions regarding the occurrence report being sent to the magistrate. So those can be strengthened and the magistrate can look more closely towards it. Similarly, how the police makes up case diaries, even though those are not consistently monitored by the magistrate, but there can be mechanisms which can be developed through which these case diaries can also be looked into by the magistrate himself. So that everybody is saying it will not be very easy. Yes, it sir. will be difficult. Yes. Because we have vested interests, we have a culture of policing, we have borrowed a colonial culture. फैक्ट तो यही है, जिस चीज को मैंने अपने एक्सपेंडिंग होराइजन्स में लिखा है वही प्रॉब्लम हुई है। आर्टिकल 372 में जहां एडेप्टेशन हुआ, हमने ब्रिटिश टाइम के लॉ को अडेप्ट कर लिया, तो ब्रिटिश टाइम का माइंडसेट भी अडेप्ट हो गया साथ साथ। उसको हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं कर पाया और जजेस ने भी क्वेश्चन नहीं कर पाया, सिटीजनरी ने भी क्वेश्चन नहीं कर पाया, क्योंकि वो हमको कोई प्रभावित नहीं करता। हम सब लोग तो बड़े प्रिविलेज्ड हैं। Therefore, इस चीज को देखो तुम, जिसको हर्बर्ट पैकर भी कह रहा है, by contrast the police or official prosecutor operated and police or professional organizations rarely behave like a court. Again, while discussing two models of criminal process, Packer refers to principle of legality in the context of common ground or the widely shared values in every system that requires that unless there exists a crime,
the state shall not proceed against person. Where there exists a crime, the state is under an obligation to enforce the criminal laws. Recalling greater possibilities of abuse of criminal process at the hands of executive agencies, Professor Packer provides a unique formulation of presumption of innocence. वो ये कहते हैं कि police and prosecution start with the presumption of guilt, but courts have to start with the presumption of innocence. ये अंतर है. Presumption of innocence is a legal desideratum, is a requirement of law. And presumption of guilt is merely descriptive. You cannot start with presumption of guilt. Why should police start with the presumption of guilt? Every poor man, every man belonging to minority, every man belonging to lower caste is presumed to be an accused. Why? Why should this presumption of guilt inhere in a free society? That is a question that Herbert Packer says courts are bound to follow presumption of innocence, while as executive agencies are not bound to follow presumption. They go by presumption of guilt. और गिल्ट को नेगेटिव करो तब उसको छोड़ेंगे. कितने केसेस हैं, आदमी बंद हो गया, झूठ झूठ में बंद हो गया, कोई कुछ साल, कुछ महीने, कोई कुछ साल भी. एक केस था जिसमें 11 साल के बाद शहनवाज वाला केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलीज किया है. कोर्ट में उसको मारा भी गया. Shahbaz Hussain versus State of Rajasthan. In this case, the petitioner had been in custody for offences under 147, etc. And then in the prison himself, he was given 11 injuries. And he made an FIR. Magistrate ने कहा कि इस FIR को वो किया जाए, examine किया जाए, but no action ensued in the report. His petition was dismissed by High Court, the Supreme Court, 3-judge bench. Justice Ramanna, Suryakant and Bose not only ordered a release on bail after 11 years. The state for an inquiry on the custodial assault. Thus, the bail got vindicated at long last after a long and agonizing period in custody. And in this case, Shahbaz Hussain, he was re-arrested within few weeks. The matter came before the High Court. High Court ne kaha, now we have another FIR against him. FIR थी तो 2010 की FIR. सारी FIR एक साथ क्यों नहीं क्लब की तुमने? तो नहीं साहब, हम ये दूसरी FIR है, इसके लिए अरेस्ट किया. हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा मत करो भैया, सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ चुकी है ऑलरेडी. ये बार बार करोगे तो अब की बार हाई कोर्ट को ही डांट पड़ेगी. Therefore बेल उसको दी गई. तो ways of administration are curious. So, but why should I think that brings us to Yes. The value of Herbert Packer's integrated critical view when he devotes one full chapter on correction of errors, जिसको ये कहता है हर्बर्ट पैकर, chapter arrest to charge and from charge to guilt determination, and chapter 11 review of errors by the court.
review of errors by the court is a chapter in the book. I want some of you at least, to study Herbert Packer's, at least these chapter 5, chapter 8, and chapter 9, and see how the book has studied criticalism in an integrated way. And that is the value of Herbert Packer, and that is the value of criticalism for criminal procedure issues, because unless you can study the criminal procedure issues critically, merely studying substantive law issues, which figure very rarely in cases, unless it is a very celebrated case in which there is a debate about the elements of liability, etc. Accepting cases now on sedition law, सेडिशन वाले केसेस में क्रिटिकल स्टडी हो सकती है, या केसेस ऑफ अनलॉफुल एक्टिव और अनलॉफुल असेंबली एक्ट वाले में क्रिटिकल स्टडी हो सकती है. अदरवाइज सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ में बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है. देयर आल्सो प्रोसीजरल इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. कितनों में बेल मिलती है, किनको बेल मिलती है, कितना समय बाद बेल मिलती है, बेल के पहले कितने दिन कोर्ट जेल में बंद रहता है आदमी. Another book that I have referred here is a book, Waiting for Trial, pre-trial processes. उसमें कितना समय लगता है. That's also an excellent book. Power of the police to detain in custody before bringing to the court or filing charge sheet. What are the rights of the accused in pre-trial custody? Do police have exceptional power in serious cases? How are the police made accountable? What decision-making apparatus do you have in remand matters? What are the trends in grant of bail or custodial orders? Legal, administrative, or organizational arrangement for pre-sentence custody? What rights are enjoyed by pre-trial and pre-sentence prisoners? What are the conditions in the custodial care of pre-trial prisoners? Special problems of juvenile, female, women, foreign and high security prisoners. Current reform trends. As a Max Planck Fellow, I was invited to write about the Indian position in the aforesaid compilation and had to refer to the aforesaid issues every now and then. The compilation ends with a concluding section that contains a comparative study of arrest process that breaks it down into incisive details such as what happens in the first hour of arrest, what are the rights of the suspect, time limit for each process after arrest, what are the conditions in police custody, are there any social aspects relating to arrest? Therefore, stage-wise understanding criminal procedure possible only if each of the stage and processes within the stage can be examined with a similar critical gaze as elucidated in the concluding part of the Waiting for Trial. This book, this compilation in 2 volumes, is Waiting for Trial. 26 country presentations are there. I'm one of the authors of Indian Position. That was way back in 1994. तो इस तरह से अगर critically criminal processes को examine किया जाए, nitty and gritty, arrest stage, small, what time does it take, and all those things, then only we can develop a kind of critical insight of Indian
criminal justice. I think better would be to call it, instead of criminal law, criminal justice. Criminal justice is a more comprehensive term, which would include substantive criminal law as well as procedural criminal law. फिर उसमें प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. Criminal justice में process is included. Substantive criminal law is also included. उसका title critical criminal justice. Yes, sir. चलो नेक्स्ट टर्न क्या चाहते हैं माधवी जी आप? Sir, देख लें सिलेबस में, if any topic you wish to address out of it, कि कोई भी टॉपिक सर जो है of your choice देख के. Monday, Tuesday will be our class now. ट्यूसडे आप ये नहीं चाहोगे कि stages in a criminal case, investigation stage in particular, यही सब इसमें role of supremacy of police and यस सर, इन्वेस्टिगेशन या अरेस्ट कोई भी एक इशू उसमें हम ले सकते हैं सर. we can do this. हाँ, इन्वेस्टिगेशन विल बी फाइन. उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट तीनों इसमें, हाँ वो एक साथ ही आ जाएंगे सर. रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम, हाँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, yes sir, yes sir, that is this. So Tuesday we can have the same time. Tuesday we can have that. Same that time. would be no problem. Ji sir, ji sir. So for any question, anybody has any observation? Nitish, you can hear me? Yes, sir. Any question do you have? Sir, there was one comment regarding the discussion, a very fierce discussion, very pertinent discussion, which was going on regarding the police powers. I think police is already under so much pressure, especially under the pressure from two authorities. They have one side political executive constantly interfering in their work, and second is judiciary. So in any case, police is under the check and balance of two authorities, and some sort of discretion is required, because sometimes a person poses more trust in a local policeman rather than an English taught judge who may not be able to understand the rustic tone or rustic language of a common person. So I think check and balance is already there, and police is already working under some sort of pressure. What do you think? Police is under pressure. Very nice. If police is under pressure, then you want more freedom to the police. They are already under pressure from Deshmukh Sahab also, from Paramveer Singh also. They are pressure from money lobbies also. Whose pressure? You have to decide about it. Sir, I'm not advocating more power to police, but I'm just saying that already there are checks and balances in the system which are working. No, do you think in Bahraich rape case, the rape case of Bulagari rape case, they were under pressure that they submitted their charge sheet after 95 days? And whose pressure were they? They were under pressure when they burned the dead body at dead of night? So there also they are working under the political pressure. No, could they not say that we don't want to be subjected to political pressure? Because are they not taking salary for that job? But sir, it is the practical reality, especially in UP. We saw in the previous government that all the SHOs, or mostly they were the Yadavs, so they had that political affiliation to a particular party, and they were working under some sort of political instruction. So Nitish will have to answer this as a democratic society, civilized democratic society. Models to accepted hai. भाई यूएस में भी यही समस्या सामने हुई. They were under the pressure of white supremacists. डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे थे ये करिए, मगर आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा रूल ऑफ लॉ.
that is Romero is now, Bajpayee Sahab is right in a way, कह रहे हैं कि accountability only to law. और नेता लोग कह रहे हैं accountability to political power, which is accountable to public. To which accountability do you want? Rule of law accountability तो दिखाई देती है. It is determinable. Students को भी मालूम है rule of law accountability ये है. और नेता वाली accountability तो वेग है. उसमें देशमुख साहब की भी accountability हो सकती है. Accountability to देशमुख with 100 करोड़ रुपया लाओ. Accountability to, अब वो तो फिर confusion हो गया ना. Sir, here I just want to say something, sir. I am Jasper here. So in regard to this police discretionary power, I just want to say that it's just not the case of having political pressure. So even if we will leave certain cases, certain particular cases, despite that, even if we will look at ground level, pick any case. I mean, just not pick any one case, pick any case, and you will realize that police is having so much amount of power subject to discretion, that they are using discretion to the extent that while doing the investigation, intentionally they will not pick the documents or material necessary from the angle of a victim or from the angle of the accused. So they will prima facie pick that material in the charge sheet. They will prepare their charge sheet in a way to make sure that a person accused should be subject to prosecution. I mean, intentionally they never used to do. So it's just not the case of a particular one incident, but generally this is the trend, which I had observed in 10 to 15 years of my practice. And this is generally the tendency. So it means when this is the case, it means there is something wrong with the system itself. So when we say police, so it means there is something wrong with the police discretionary power itself. And therefore, there is a necessity now that there must be some accountability. Well, otherwise, forget about single case. Every case you will figure it out the same thing. And right from theft, small case, to go into any extent, I mean, murder, dacoity, enter into any domain, you will figure it out that discretion is there and unchecked discretion is there. Now, there are any number of scholars, Jasper, like Stephen Box had said somewhere, he said that all power is criminogenic. True, चाहे वो gender power हो, चाहे वो corporate power हो, चाहे वो police power हो, चाहे वो political power हो, is criminogenic. The only safeguard against power is checks and balances. More checks and balances and more effective checks and balances. Yes, sir. True, sir. Checks and balances कैसे लगाए जाए? कौन लगाएगा? Sir, on this note only, I also feel that our notion of accountability is itself problematic in some way. I tell you, we have somehow acquired the meaning of accountability as if it is to be extorted, it is to be imposed, it is to be sort of derived. We do not have any sense, because accountability meaning was never the way that we have developed over a period of time. We think that if you regulate, if you monitor, if you supervise, then the accountability comes. We need to inculcate the institutional culture in a manner where accountability becomes a natural phenomenon. I tell you, sir, one example. When an individual police officer commits wrong, he is acting in his individual capacity. He ceases to become a member of institution or agency, representative of agency. Because agency as a system does not endorse any wrong indulgence. So the moment a police officer chooses to commit that is something wrong, he becomes aloof from the institutional norm and culture. He is doing this in his individual capacity. He ceases to be the member of police force. So we need, as a part of, as long as he remains committed to the institutional ethos and rule of law, he cannot be unaccountable to the law. So we, all the police officers who have acted wrong, who have committed rape, who have committed bribery, they were behaving in the individual capacity.
because no institution endorses the practice of wrong this fashion. And in police, we teach accountability, we teach law, but we never teach how in accountability becomes, it comes natural to Yes, the we group. have to be little. We have to be little honest. Honest in the sense that we should not say that it is only one bad apple, which is in Minnesota, Minneapolis policing justice department is studying whether it is pattern or practice of police to behave the way Choco killing is being conducted by the police. Police, they are studying whether it is a practice, is a part of a system. अब वो लोग ये चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि वन वन बैड पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं है, ये सिस्टम से जनित है, और ये सिस्टम से अगर जनित है तो फिर इसके खिलाफ हमको स्ट्रॉन्ग एक्ट करना पड़ेगा। अगर अब्यूज ऑफ इन्वेस्टिगेटिव पावर सिस्टम से जनित है तब तो हमको फिर कुछ एक्ट करना पड़ेगा। Sir, अगर in fact, एनकाउंटर सिस्टम से okay, जनित Nitish, please. Sir, I just wanted to draw one analogy. What Sir said. I was reading one article, Jordana Balkin's Boot and the Spleen. So here the author talks about the cases in India in the early 20th century. Lord Curzon was the Governor General of India. एंड वहां पे भी सर यही सेम आर्ग्यूमेंट आता है। वहां पे हुआ क्या कि एक 9th लैंसर्स करके ट्रूप है मिलिट्री की, वो लोग रेसिज्म कर रहे हैं, इंडियंस का रेप कर रहे हैं। दैट इज अ ट्रूप ऑफ द इंडियन आर्मी एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड लॉर्ड कर्जन इज पुटिंग दिस आर्ग्यूमेंट दैट इट्स the individual which is doing that, not the collective. And for the first time the whole troop was punished. So after the investigation, it was said that the whole troop is liable for it. So maybe we are just putting the same argument which the people at that point in time were putting, that racism is by an individual, not by the collective. But ultimately the liability has to be fixed on the collective rather than the individual police officer or the individual member of the troop. I think this is precisely the question, Professor Bajpayee, क्योंकि पुलिस में policing में जिस तरह से ये लोग honestly they want to see is it a pattern or practice in the police to behave that way. If it is a pattern and practice, then we'll have to find out another thing. If abuse of investigation power is a pattern and practice, सर देखिए, में कोई रिसर्च Sir. की कमी नहीं होगी। यस जसपर, Sir, one thing I just want to say that pattern and practice. अगर yes, आप भी sir. कहेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगा कि Sir, over ये this pattern, I just want to say, but sir was also saying that when it's a law, we will abide by the law. But the problem here is even law is silent. So when we talk of CRPC, when we talk of investigation, after investigation, there is no pointers given that investigation has to happen in this way or that way. Though there are police manuals, there are police acts, so on and so forth things. There are trainings happened at police training college. But despite that, we become silent there, and exactly. we become So complicit by our silence. because true, sir, and therefore, when investigation has to be done, it has to be done by a person, and as a pattern, they are going to teach to the another. So senior to junior, there is a practice. So the moment a new joinee will come, he has to learn from the senior fellow how the investigation has been done. There itself, at the time of investigation, everything is over. So it means whatever accountability and transparency you're talking of at the time of investigation itself, it's all over. So forget about crimes, nature of the crime. In every offense itself, whenever the investigation is going to happen, there is no pointers with the police. So it's at the women fancy, sir. That's why if you see Sakiri Vasu, there were very few pickers even in the Supreme Court. Sakiri Vasu 2008 का जजमेंट है, जस्टिस ये काजू का, और 2012 में सकरी बासु का नाम एक और जजमेंट में तांबे में आया, और फिर 2016 में उसका नाम जस्टिस शिवकीर्ति सिंह ने लिया सकरी बासु का। अब 2019 में सकरी बासु का नाम एक बार और लिया है रोहिंटन नारीमन ने। क्यों था सकरी बासु इतनी बुरी चीज क्या कह गया?
उसने यही तो कहा ना 156(3) में, मजिस्ट्रेसी हैज पावर टू मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन. अगर गलत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अगर एरोनियस लाइंस में हो रहा है, तो मजिस्ट्रेसी शुड हैव पावर. तो ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी उसने, बट उसको किसी ने पिक करने की, क्योंकि हम सब कहते हैं कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़ी जरूरी है. जज साहब यही कह रहे हैं और हम लोग भी यही कह रहे हैं. One more thing, sir. To me, it looks, if we magnify this picture a little larger, you will come to a conclusion that these issues are the product of several interacting factors, which are systemic, which are individual, which are organizational, which are societal. Because when one person acts in wrong way or right way, there are variety of factors. So you need to look at our criminal justice system also. The flaws in criminal justice system would reflect in the problematic functioning of its agencies. You cannot simply, condone this particular thing. This will happen. So because our system is riddled with all kinds of infirmities, structural, functional, policy, and the last job is given to the police at the visible level. So in a visible level, every wrong is located in the functioning of an agency who is the most visible. That is also. I have seen a video very recently, two videos. In one video, the police was behaving very arrogantly and probably doing this, that. Another video I have seen, many of you, it is becoming viral. A very energetic lady who has claimed to have cleared the IAS men, and she was firing the police officer like, this is also too much. The citizenry is also getting very aggressive at certain point of time. No, but yes, you have to, one thing at a time. When you are talking of the role of the police, don't bring citizenry there. We are not talking about the role of citizenry. Hey, I'm saying, sir, these are the interacting factors. A police officer develop his role vis-a-vis society and vis-a-vis system. आप पुलिस आइसोलेशन में काम नहीं कर रही है सर, इसको हमें समझना पड़ेगा. इंडिया देखिए सर, ये तो करना ही पड़ेगा कि सैलरी कौन ले जा रहा है, किसके बैंक में जमा हो रही है. मैं एक बात और कहूँ सर, जमा हो रही है वो. दुनिया के किसी भी देश में इतनी हेट्रोजेनिटी नहीं है जितनी इंडिया में है. सो पुलिसिंग इन ए सोसाइटी लाइक इंडिया इज वेरी डिफिकल्ट. आप देखिए यूरोपियन कंट्री में कोई बहुत इशू नहीं है पुलिसिंग का. दे आर पुलिसिंग ए होमोजीनियस सोसाइटी. अमेरिका में थोड़े हैं बिकॉज वहां थोड़ा डाइवर्सिटीज उस तरह की हैं, रेस है, पुअर है, गरीब है, हर है, वो प्रॉब्लम आपको मिल रहा है. इंडिया और बड़ा मॉडल है, तो हमें थोड़ा एक ऑप्टिमम लेवल भी समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां तक रहेंगी. तो थोड़ा इनको मिनिमाइज तो किया जा सकता है, लेकिन ये बड़े सिस्टमिक रिफॉर्म के लिए. सर एक आई जस्ट वांट टू पुट अ रेफरेंस पॉइंट हियर. सर, इंडिया गॉट द पुलिस फ्रॉम द colonial time, so that colonial mindset is there. Indian constitution is not meant, not created like the British constitution or American constitution or French constitution. So, and European constitution, European police is completely different from Indian police system, because Indian police system is the follower of colonial mindset. So therefore that master servant and that they have to abide to their master, that context is still present. Whereas this is not the case with European police at all. Therefore it is under the prosecution also, and their investigation to that extent is though again, not as a pointer, but that is still under the control of the prosecution, which is not the case in India. So in India, the investigation is completely free. We open the CRPC. CRPC is one for everyone, for teachers also, for police also, and for lawyers and teachers and judges also. But nowhere, when it comes to investigation, anything further has not been described. So when that and then investigation by whom? By the senior police officer. Here it is not the case of ASI is coming or constable is coming. It started with SI. So systematically it has been trained initially beforehand. So it is not that first interaction with the citizenry as such, but within the system they are taught. So there is a pattern. You will figure it out from the initial stage. The first, otherwise, when the first investigation an SI is doing, how can that's a possibility? That same investigation pattern he is following, which the others are following. It means biased investigation from the first day itself, where they intentionally are ignoring certain factors. Sir. So even a very, I remember Niederhofer.
he has written a very wonderful. This dilemma was very well reflected in his book called Ambivalent Force. Ambivalent force, he's actually raising the same police you will find doing some duty at the time of earthquake, tsunami, then COVID, and the same police in India. We have not classified the police. America has done it. Actually, they are now classifying the police to some extent. एक पुलिस आप सिर्फ इसके लिए बना लो कि जो आपको हार्ड क्राइम डील करना है जहां कहीं है, क्योंकि वहां पे अमेरिका ने देखिए आप ऑर्गेनाइज क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, उसके लिए उन्होंने पूरे यूनिटी अलग बना दी, क्योंकि हमारे यहाँ वही पुलिस ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल कर रही, टेररिज्म को वही सिविल पुलिसिंग कर रही। सिविल पुलिसिंग इज वेरी डिफरेंट। पुलिस का क्रिटिसिज्म छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा होता है, और वो थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्पेशलाइजेशन की कमी है पुलिस में। द वे लॉ हैज स्पेशलाइज्ड, the way the other walks of life have got specialized, police continues to be the same. उसमें स्पेशलाइजेशन, अब आप जुवेनाइल पुलिस की बात कर रहे हैं, कहाँ है जुवेनाइल पुलिस? आप फिर जेंडर वाले मैटर आ गए, जेंडर की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है जेंडर इश्यूज को। तो हमने एक पुलिस को छोड़ दिया है बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड। मैं बता रहा हूं, दिस इज द लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड नथिंग एल्स। पुलिस आर नॉट रेडी टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी इन वो तो चला रहे हैं किसी तरह, ये देश चल रहा है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो कुछ थोड़ा बहुत काम चल रहा, अगर इनको विड्रॉ कर लो तो वो भी खत्म हो जाएगा। इट इज समहाउ मैनेजिंग दिस कंट्री। पुलिस की नंबर कितना है, आपके पास क्राइम कितना है, नंबर कितना है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस कितनी है, ये थोड़ी रियलिटीज भी है। वो तो जो गलत कर रहे हैं वो तो गलत है, इट शुड बी डेल्ट विद, बट थोड़ा एक रियलिस्टिक एनालिसिस। जो देखो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा की जो सेकंड वॉल्यूम आया है, उसको आप पढ़िए, द परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ द पुलिस। अरे पुलिस परफॉर्म ही नहीं कर रही तो इंडिकेटर कहां से आएंगे? क्योंकि आप उनको परफॉर्म वो कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं? वो तो बहुत बेसिक काम कर पा रहे हैं। फिर आपने उन्हें कोविड में लगा दिया। अब कोविड में लगा तो कोविड में जो कोविड से वैसे ही आदमी परेशान है, अगर वो किसी को रोकेगी तो 4 गाली वो भी देते हैं। तो पुलिस की जो नेगेटिव इमेज है कई बार वो भी क्रिएट होती है जब आप सोसाइटी से बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं। और खासतौर से अब गवर्नमेंट तो फेल हो रही है कोविड में, वो पुलिस को आपने आगे खड़ा कर दिया कि तुम देखो, सारी क्रिटिसिज्म जा रही है पुलिस के हिस्से में। वो जानी चाहिए बेसिकली, वो म्युनिसिपल का काम है। वहां नासिक में गैस लीक हो गई, 22 मर गए। अब पुलिस के हाथ से एक जख्मी हो जाए तो फिर वो डायरेक्ट बन जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वी आर लिविंग इन ए कंट्री रिडल्ड विद all kinds of problems where diversity, where the multiplicity of issues, इतनी क्लियर रास्ता नहीं है उनकी। मगर मैं ये Sir, actually, I mean, I am the not in COVID-19 management and lockdown enforcement created opportunities for the police to raise their clout and get out of accountability stranglehold. मेरा दूसरी चीज है, मैं कहता हूँ इनको कोविड वगैरह इनके लिए भाग्य से चीका फूटा। अगर कोविड ना आता तो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी और बढ़ती। जो आफ्टर निर्भया केस के बाद जो अकाउंटेबिलिटी का जो स्ट्रैंगल होल्ड था पुलिस के गले के चारों तरफ, जो अवनीश कुमार में, जो ललिता कुमारी में टाइट हो रहा था, वो लोग कोविड की वजह से छूट गए। तो ये हमारा विचार अलग है। ये भी सही है सर। देखिए सर, एक मैं बताऊं सर, कहीं ना कहीं मैंने कहीं पढ़ा था कि इन केस ऑफ इंडिया, whatever you say and whatever you find to be correct, the next opposite is also equally true. नेक्स्ट अपोजिट इज ऑल्सो इक्वली ट्रू। आप हर तरह के एग्जाम्पल ला सकते हैं, लेकिन मैं जो एक ऑप्टिमल लेवल की बात कर रहा हूं कि वी हैव stark contradictions in society, all kinds of contradiction, और वो वहां पे पुलिस को जो रोल परफॉर्म करना है वो बहुत चैलेंजिंग काम है, और उसके लिए पुलिस ट्रेनिंग वाइज अभी तैयार है। Sir, only one thing. Sir, only one thing, that though you are talking of that because they are the front force and they are performing during the difficult COVID-19 time, so therefore their image has been down. But my proposition is not their work at this juncture. My proposition is only in case of CRPC, and that is strictly as per the investigation. So whenever that function is given to them, whether they are performing well after 70 years, so I think that because of that colonial mindset, they are completely failed. So when it comes to investigation, even I mean, right from the first word, that investigation is completely discretionary. So whatever the investigation officer thinks, he follows that. I mean, this is therefore is
I mean, just want to submit. So I am on that point only. Jasper ji, actually, right from the beginning, the function of executive has been kept very sacrosanct, and police has been giving उसपे सारे प्रिवी काउंसिल से ये बात तय हो गई थी कि पुलिस का अपना एग्जीक्यूटिव डोमेन जो रहेगा उसमें हम ज्यादा इंटरफेरेंस, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है 482 के ऑपरेशन पे कि आपको अननेसेसरी इंटरफियर करने की जरूरत है, पुलिस को अपना काम भी, इन्वेस्टिगेशन इज देयर ओरिजिनल डोमेन। हाँ, वो गलत कर रहे हैं, दे नीड टू बी अकाउंटेबल। वहां जो सर कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट का रोल आप रिफाइन कर सकते हैं कि वहां सुपरविजन, इन्वेस्टिगेशन, तो जो कंसर्न है रूल ऑफ लॉ के, जो सीआरपीसी की कंप्लाइंस है इन्वेस्टिगेशन में, अरेस्ट में, डिफॉल्ट बेल में, that we'll, I think, in the next lecture, yes, let sir. us keep it. Probably we'll take these issues. Criticalism in 3 stages. That Yes, is yes, sir. reporting Yes, of crime, yes, sir. investigation of crimes, Yes, and sir. arrest, etc. Sure, sir. इसके context में we'll discuss it. Let's keep it on Tuesday. Yes. We can have all these discussions. Discussion. Yes, sir. there. So we all reassemble. Yes, yes. Jasper, we can come on Tuesday. Yes, Sure, yes, sir. Sure, sir. I will be there, sir. Thank you for joining, really, Thank you, Jasper. sir. And so this is my pleasure to thank you formally for taking your time out to. My joy, I enjoy. Yes, sir. Discussing. Shivashita, do you have to say anything? Sir? Shivashita, yes. Your last Sir. word from you. Yes. Yes, sir. I would like to thank you on behalf of all the students for dedicating this afternoon for teaching us such critical concepts of criminal law, as the name of the subject is. And we will definitely read the article that you have written. And if we have certain doubts, we can always ask you. You can share with me. Yes. Critical criminal justice, not criminal law. Yes. Criminal justice, law narrow. Criminal justice में Yes. दोनों include हो गए, substantive and procedural. Yes, sir. Yes. And I want procedural law to come out. Yes. Thank you. Chalo, all the Thank best. you, everybody. Thank you, everyone joining. Huh? Thank you, sir. See you. Have a good day.